Hi friends, today I'm back with yet another topic that is much awaited topic. I know that all of you wanted to talk about overthinking and that too in very detail. So I'm here with the topic, but that cannot be covered in one video though. So I will be giving a series of videos where I will be talking about overthinking and what are the reasons, and finally I will come up with small steps how you can overcome overthinking. ओवरथिंकिंग को अगर हम सरल भाषा में समझें तो एक कंटिन्यूसली थिंकिंग ऑफ समथिंग और सम सिचुएशन एंड नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट, उस सिचुएशन से फिर बाहर नहीं आ पाना। अलॉन्ग विद दैट चाहकर भी उसका पॉजिटिव साइड नहीं देख पाना, नेगेटिविटी ही चलती जा रही है, नेगेटिव सोच ही चलती जा रही है और पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं देख पा रहे हैं। उसके साथ आपके अंदर इमोशनल और मेंटल और फिजिकल फैटीग फील कर रहे हैं साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली। Anything in excess is always bad. We have always heard that. Same as with overthinking. Same as with thinking. Thinking when becomes overthinking, it becomes dangerous, injurious for your mind, for your activity, for your functionality. So, overthinking always leads to a negative state of mind and block your actions. Functionality रुक जाती है आपकी। ये एक इतनी थिन लाइन होती है कि जब आप किसी से कहते हैं कि आप ओवरथिंकिंग में हैं, तब भी वो मानने को तैयार नहीं होते कि भाई नहीं, हम तो सिर्फ सोच रहे थे, ओवरथिंकिंग तो नहीं कर रहे थे। अगर आप ओवरथिंकिंग नहीं कर रहे हैं तो आप फैटीग महसूस नहीं करते, आप इमोशनली मेंटली एग्जॉस्टेड फील नहीं करते। और अगर आप ये सब कर रहे हैं, इसका मतलब फिर आप ओवरथिंकिंग भी कर रहे हैं। अगर आप सोचते सोचते एंशियस हो गए हैं तो इसका ये कारण है, इसका ये मतलब है कि आप कहीं ना कहीं या तो फियर्स में चले गए, या फिर assumptions में चले गए, या फिर पास्ट के किसी रिग्रेट्स में चले गए हैं, प्रेजेंट में नहीं है। या फिर ये कहें कि फंक्शनैलिटी, जब हम ओवरथिंक करते हैं तो आपकी फंक्शनैलिटी हिंडर हो जाती है। फंक्शनैलिटी हिंडर होने का मतलब ये है कि आपका जो डेली रूटीन है वो इफ़ेक्ट होने लग जाता है आपकी सोच से, आपके थॉट से, बिकॉज आप इमोशनली इन्वॉल्व हो गए हैं उस सोच के साथ और सोच को छोड़ ही नहीं पा रहे। चाहे आप कितनी कोशिश करें, आप उस सोच से बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं। सो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, थिन लाइन कब हम क्रॉस करते हैं। अगर हम ये समझ लें कि हमने थिन लाइन क्रॉस कर ली है, थिंकिंग से ओवरथिंकिंग की तरफ बढ़ गए हैं, तो वी कैन डेफिनेटली कंट्रोल इट। होता क्या है जब हम ओवरथिंकिंग में होते हैं? हमारे थॉट्स दो दिशा में भागते हैं, या तो पास्ट में या फिर फ्यूचर में। अगर हमारे थॉट्स प्रेजेंट में रहें तो ओवरथिंकिंग होगी नहीं। तो क्या होता है, जब हमारे थॉट्स पास्ट की तरफ होते हैं, पास्ट की तरफ भागते हैं, तो हम सोचते हैं कोई ऐसी सिचुएशन के बारे में, किसी ऐसे पर्सन के बारे में, या कोई मेजर लॉस या बिट्रेयल या कोई ट्रॉमा जो हमने पास्ट में हुआ है, या किसी की डीप मेमोरीज, हम उसमें डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं, सोचते चले जाते हैं, बाहर नहीं आ पाते हैं। क्योंकि सोचते सोचते ये जन्म देता है रिग्रेट्स को, लॉस को, पेन को। If we want to correct our overthinking patterns, we need to understand what is the reason behind the overthinking. The first thing to identify is identify the thoughts. Thoughts किस तरफ जा रहे हैं? Thoughts क्या आपके पास्ट से रिलेटेड है या आपके फ्यूचर से रिलेटेड है? पहली चीज आइडेंटिफाई जो हमें करनी है वो यही आइडेंटिफाई करनी है कि थॉट्स पास्ट से है या फ्यूचर से है। दूसरी चीज जो हमें आइडेंटिफाई करनी है वो हमें आइडेंटिफाई करनी है कि उसके रीजंस क्या हैं, व्हाट आर द रीजंस ऑफ ओवरथिंकिंग, उसके रूट्स कहाँ हैं ओवरथिंकिंग के, अगर चाहे वो पास्ट से है चाहे फ्यूचर से, व्हाट आर द रूट्स। So I'm listing some of the
There can be many reasons of overthinking. I'm listing some major reasons of overthinking here. The first one is assumption. The second is fear of judgment. Then is fear of taking wrong decisions. We do not want to take, we always want to take the right decision. Then is low self-esteem or self-worth, self-doubt that comes from low self-esteem. We do not trust ourselves. The self-doubt can emerge from there. Then there's trauma and bad past, hurts, betrayal, not making closure with the past. That can be another. That relates with the grief which I mentioned. If we have a major loss in the business, or we have a loss of a close one and we have not made a closure, there we keep on overthinking and we are not out of the thought. So all these are collectively can lead to overthinking. So everybody has to identify first the reasons of overthinking. जब हम खुद से कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि, जब आप खुद से कोई भी सेंटेंस आप इस बात से स्टार्ट करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, या मुझे ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन में दिस पर्सन हैज डन दिस टू मी। जब आपके वर्ड की सेंटेंस की स्टार्टिंग मुझे ऐसा लगता है से होती है, या फिर अगर आप कुछ सोच रहे हैं और सोचते ही चले जा रहे हैं, जस्ट आस्क योरसेल्फ ये मुझे ऐसा लगता है या ऐसा है। आस्क अ क्वेश्चन टू योरसेल्फ, और अगर आपका आंसर है कि मुझे ऐसा लगता है, तो अंडरस्टैंड कि वो एज्यूम कर रहे हैं आप, एजम्पशन है। एजम्पशन 50% सही हो सकती है, 50% गलत भी हो सकती है। तो किसी भी चीज को अपने माइंड में बिठाने से पहले उसका ये इस बारे में जरूर सोचें कि वो एजम्पशन है या रियलिटी है। हम एज्यूम करते हैं सामने अपने रिलेशंस के लिए, किसी सिचुएशन के लिए, हमारा माइंड एज्यूमिंग में चला जाता है और एक एजम्पशन के बाद दूसरा एजम्पशन, तीसरा एजम्पशन चलता ही जाता है, बिकॉज आप अपने आप से बात करते हैं। अब आपका माइंड आपके खुद से ही बात कर रहा है। एज्यूम जब करते हैं तो हम खुद से ही बात कर रहे हैं, खुद ही क्वेश्चन कर रहे हैं, खुद ही आंसर कर रहे हैं। तो वो वन आफ्टर द अदर बढ़ता ही जाता है, और जैसे ही बढ़ता जाता है हम एक लूप में फंसते जाते हैं, जिसको हम ओवरथिंकिंग कहते हैं। दूसरा एस्पेक्ट है फियर, डर। डर हमें जजमेंट का भी होता है, डर हमें रॉन्ग डिसीजंस लेने का होता है, और जब हम इस डर में होते हैं तो हम बहुत सोचते हैं, क्योंकि हम अपने आप को गलत नहीं देख सकते या गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते, ब्लेम नहीं होना चाहते, या फिर ये कह लें कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते कॉन्सिक्वेंसेस की। जो भी हम डिसीजंस लें या जो भी हम डिसीजन लेना चाहते हैं उसके हम रिजल्ट्स की कॉन्सिक्वेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे हैं। तो डर एक बहुत मेजर रीज़न है जहाँ पे हम बहुत ओवरथिंक करते हैं और प्रॉस एंड कॉन्स इतना सोचते हैं कि एक्शन ही नहीं ले पाते। उसके चलते कोई डिसीजन ले ही नहीं पाते, डिसीजंस डिले हो जाते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन होता है, दैट यू स्टार्ट डिलेइंग एवरीथिंग। फियर ऑफ जजमेंट भी होता है कि हम सोचते हैं कि हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे। दिस इज अनदर फैक्टर जब आप बहुत ओवरथिंक करते हैं। तीसरा फैक्टर है लो सेल्फ वर्थ और लो सेल्फ एस्टीम, जबकि दूसरे सभी फैक्टर्स इसी एक फैक्टर से निकलते हैं। जितने रीजंस हैं वो ये मेजर रीजन है हमारी लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ वर्थ होना, जिससे डर भी निकलता है, जिससे हम अज्यूम भी करते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन व्हिच वी विल बी डिस्कसिंग about in future. Then is the trauma and betrayal in the past. जैसे मैंने बताया कि grief, कुछ major loss of a person or a business or finances, this or any trauma can also lead to overthinking, that you are hooked in the past और आप उसी past की memories में ही फंस गए हैं और वहाँ से निकल नहीं पाते, because आपको present में कोई interest नहीं होता, क्योंकि past में ही memories आपको जकड़े रखती है। हम क्लोजर नहीं कर पाते हैं, पास्ट में जो भी हुआ उसको क्लोज नहीं कर पाते। देन इज सेल्फ डाउट,
जिसके अपनी रूट्स अगेन लो सेल्फ इस्टीम और सेल्फ वर्थ में है, जब हमें खुद पर विश्वास नहीं होता क्योंकि हम खुद को ट्रस्ट नहीं करते और हमें वैलिडेशन और एश्योरेंस अगेन एंड अगेन चाहिए। तो सेल्फ डाउट एक अलग रीज़न है ओवर थिंकिंग करने का। हम एक चीज़ को बार 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 सोचते हैं। Because you have to identify the reasons behind the overthinking and you have to work. It's a journey, it's an inner journey where you have to actually work consistently over your reasons, and reasons can be fear and assumptions, betrayal, trauma, and experiences which have been in the past. So for that there requires a proper constant work with yourself and conscious work with yourself. I can tell you very simple steps which can which can help you to come out of this overthinking. The first is to identify the responses from the body. Your body will tell you when you are overthinking. It will become a little fatigue. It will become restless. आपकी body restless हो जाएगी, आपका mind बेचैन होगा, anxious होगा या sad होगा. So the first thing is to identify the signals given by your body. Identify, be quick, be alert in identifying that you're not feeling good, you're not feeling happy anymore. तो क्या रीज़न है, अंडरस्टैंड कर लीजिए उसी टाइम कि भाई कहीं ना कहीं मैं ओवर थिंकिंग में पहुंच गई हूँ. सेकेंड, identify the emotion related to it. Identify the thought means that thought is from the present or the past. What emotion is it has generated? It has an emotion as regret, guilt, fear, pain, regret. What emotion it has generated? You have to identify that. The third is to tell yourself immediately, the minute you identify the emotion, close your eyes, take 3 deep breaths, because you're already overstressed. You are wandering in the past and the future, forgetting about the present, and the power lies in the present. After you take deep breaths, just move out of the room. Move out of the room and try to shake your body. Just shake your body and drink a glass of water. Try to walk barefoot. नंगे पैर अपने फ्लोर पे आप चलें and try to feel how it feels. Is it a warm sensation or it is a cold sensation? To just focus on that particular sensation on your feet. So bring the focus there. That will help you bring the focus back onto your present. When you have done this, just count your priorities. Count 5 priorities, 5 things which you have to do. If you are at home, just make a list of 5 priorities, what you have to do. If you are at home office, just look at your desk and just see what are the pending works you have to do. Just make a list of 5 top priorities at that point of time. The minute you write the priorities on the diary, and make sure that you are writing it, just not thinking in the mind, then again you will fall in the trap of overthinking. So it should be writing that what are the 5 top priorities right at this minute, at this time, and then start working for the first one. That is how you just come out of the overthinking loop immediately, instantly. That helps you. I really wish that this video on overthinking helps you, and I will come up with a summary also with different aspects, how different therapies to overcome overthinking. So I will come with that in another video. This was a detailed video though, and till then I really pray and I really wish that you stay safe and healthy. Thank you.